सो गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मोटो ट्रैवलॉग। सो आज हम जा रहे हैं मंदागिरी हिल्स। ये अप्रॉक्सीमेटली 70 किलोमीटर्स है फ्रॉम नॉर्थ बैंगलोर एंड दिस इज़ द प्लेस विच आई हैव बीन देयर अर्लियर एज वेल, मगर मैंने व्लॉग बनाया नहीं था तो आई थॉट कि यार चलो सैटरडे है, थोड़ी देर घूम आएंगे, ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा एंड यू नो आप लोगों से बात भी हो जाएगी। बट फॉर नाउ स्टे ट्यून बिकॉज काफ़ी चीज़ें आने वाली है और बहुत ही एक्साइटिंग जगह है बिकॉज इट ओनली डज नॉट हैव जस्ट अ हिल बट इट ऑल्सो हैज़ अ पीकॉक टेम्पल विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो बने रहिए मेरे साथ बिकॉज आई एम गोइंग टू शो यू मोर फ्रॉम मोटो ट्रैवलॉग्स एज एंड व्हेन वी गो अलॉन्ग। सो भाई लोग, ये जो रास्ता है इट गोस वाया यशवंतपुर। सो आप अगर आप हेब्बाल या उसके आसपास रहते हैं सो यू नीड टू गो टुवर्ड्स यशवंतपुर, टेक अ राइट टर्न एंड जस्ट हेड स्ट्रेट ऑन दैट रोड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 45-50 किलोमीटर्स। सो जैसे जैसे आपको दिख रहा है कि इट्स गोइंग टू बी सनराइज, आई एम ऑल्सो फीलिंग लिटिल हंग्री एंड रीज़न बीइंग यार सुबह सुबह तो अपने आप ही भूख लग जाती है बिकॉज यू विल इमेजिन फूड ऑल योर वे। So guys, welcome to यशवंतपुर। I can see lot of riders today, okay? मतलब पीछे खड़े थे and I'm sure everybody is excited for the Saturday। बट यार ये क्या है, मतलब एक सिग्नल से खाली हुए दूसरे सिग्नल पे आके फंस गए। दिस 1 hour is also looking like 5 hours to me। So guys, finally I'm getting some free road after a lot of struggle to you know drive free। So guys, this is the Parle Biscuit Factory toll. This is the first toll you know when you exit city, and as you know the best part is कि the toll is free। So guys, सूरज निकल रहा है and it is looking beautiful। Once we stop, I think I am going to show you some nice shots and we also plan to fly a drone there। देखते हैं अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, but for now the plan is on। So guys, बज रहे हैं 6:30 और हम क्रॉस कर रहे हैं नेलमंगला टोल विच इज़ द सेकेंड टोल फ्रॉम बैंगलोर। It is showing that it's around 31 minutes from here। So आगे रुकेंगे, चाय वाय पियेंगे, थोड़ा ब्रेक लेंगे and then you know we will head to our destination। But for now you stay tuned and keep subscribing to Moto Travelogs। So bhai log, we had stopped here for the tea। Now the plan is to start our journey and reach at the destination। It should take us not more than approximately 25-30 minutes। So guys, we missed the ride that we were supposed to take, so we've taken a detour। It's around 1.3 kilometers and there is a railway track। अगर आप दूसरे रास्ते से जाएंगे so you don't get this railway track, there is an underpass there। So guys, welcome to Mandagiri Hill। That's a hill that you can see and we need to see दो बाइक 20। उधर बाइक नहीं ले जा सकते क्या? बाइक नहीं जाता था ना बाइक तो। बाइक तो जाता है ना नहीं वाले। वो मैं क्या बोल रहा हूँ कि वहाँ से सिर्फ फोटो लेके आ जाएंगे वापस। फायरिंग पुलिस को। अच्छा
we have just reached here, planning to climb this hill which is in front of you. We'll start the climb. They did not allow our bikes to come here, but as you can see, this is quite a steep climb that you. भाई लोग हमको मिल गया एक flat spot, so हम जा रहे हैं drone उड़ाने. You enjoy the shot and let me know if you like this. So guys, हम अभी भी चढ़ रहे हैं and as you can see, सीढ़ियाँ ख़त्म नहीं हो रही है. But यार, the view is becoming awesome and awesome. As and when you will climb upon the hill, you will see that it's becoming very beautiful. हाँ, थकान तो होगी, but at the same time, you see a lot of people have also started climbing. So almost there, but just taking rest because it's hot and getting a little tired now. So guys, this is the top view. That's the stairs which we have come from. So guys, this is the way which goes towards the back side of this temple, which is now getting constructed. There is a lake that you will see, but the view from here is just breathtaking. So guys, if you can hear behind me, there is actually a firing range. I'm going to show you some shots. So guys, हम चलते चलते आ गए हैं back side of the hill. It is not easy to climb all the way up and come here, but behind me, this is just amazing. And that's the temple. कर्नाटका के मुद्दुगिरी हिल्स में आ चुके हैं. हमारे पास सेल में एक ड्रोन बैग है, जीवी का बैग भी 6000 रुपये का. ये बैग भी है, इसमें एप्पल का आईफोन है और 2 बाइक्स पड़ी हमारे पास. हमारे पास पेट्रोल के पैसे नहीं, आपको जो चाहिए ले जाओ, 5 लीटर पेट्रोल दे दूँगा. भाई साहब, जैसे आप देख सकते हैं कि अगर आप इस हिल पे आएंगे तो आपके सारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे, और इसीलिए हम आज सब कुछ सेल पे लगा चुके हैं. आपको ड्रोन चाहिए, आपको बैग चाहिए, आपको आईफोन चाहिए, आपको पैसे, बट कैश मत मांगिएगा. कैश मत मांगिएगा, हमारे पास एकदम नहीं है. सो गाइज, नाउ नेक्स्ट इज द मंदागिरी टेम्पल. वी आर गोइंग टू गो देयर. दिस इज द वे यू नीड टू वॉक approximately 200 meters to reach there. Behind me, that's a hill that we climbed. हालत ख़राब हो गई है, धूप आ गई है, but let's go and see how is the place and I'll update you more on this trip.
So guys, welcome to the main place of Mandagiri Hill. This is basically a Jain temple, and this is really beautiful. If you look there, that's the hill we climbed some time back, and this is the statue. So guys, this is it for today. I hope you've enjoyed the video. Please do subscribe and like Moto Travelogs. I'll see you soon in my next video.